Let me now tell you a little bit more about why we're all here today. BSE and Bombay Metal Exchange, or BME, have entered into an MoU for the growth and systematic development of commodity derivative markets in the non-ferrous metals complex. The synergy will help in launching new and innovative products, adding more value to the existing commodities value chain and ecosystem. And we are delighted today to be commemorating this synergy. Let me now invite our dignitaries to take their seats at the dais. Shri Rikab V. Mehta, President, BME. Shri Sandeep T. Jain, Senior Vice President, BME. Shri Mahendra H. Shah, Chairman, Seminar Committee, BME. Shri Ashish Chauhan, MD and CEO, BSE. Shri Neeraj Kulshrestha, Chief Business Operations, BSE. And Shri Samir Patil, Head Business Development, BSE. I'd now like to call upon Directors Shri Sushil Kothari and Shri Rajiv Khandelwal to join our dignitaries on the dais to felicitate Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO, BSE. Next, Ashish Kumar Chauhan will confer mementos on our dignitaries from BME. Shri Rikab Mehta. Shri Sandeep Jain. Shri Mahendra Shah. And Shri Ashwin Shah. BME is also conferring a certificate of lifetime membership to BSE. We've already... All right, thank you. Shri Ashwin Shah, we had already announced the name, but I think the memento, yes, here we go.
Thank you. Next, I'd like to... I'd now like to invite Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO BSE, to share his thoughts with us. Shri Rikhav Mehtaji, President, Bombay Metals Association, Shri Sandeep T. Jain, Senior Vice President, Shri Mahendra Shah, Chairman, Seminar Committee, other dignitaries of the dais, my colleagues, Shri Neeraj Kulshrestha, Shri Samir Patil, friends, ladies and gentlemen, it's a pleasure and honor to be in front of you today. It's a historic occasion. The BMA is a very old organization. BSE is slightly older, but basically we are now working together. You might have realized so many changes are taking place in the world, and we have to keep pace with what is happening. If we can keep pace, we can thrive together. If we don't, as individuals or as a group, we may be left behind. And that happened to this organization also. We are 143-year-old. For first almost 120 years of our life as an organization, we are number one. This place where you are sitting used to be the trading hall of BSE. This building, which you see every day on television million times, was the tallest building in India, and even till probably 1981. But slowly, the changes in technology came. Slowly, the changes in people's mindset came, regulators' mindset, taxation, other things. And many of our leaders couldn't actually envisage what was coming. And that is where they started fighting with the regulators. They started having issues. And then there was a large event, which is now known as Harshad Mehta event. But even that, for me, was only an outcome of many things which was coming together. Like Gandhiji, in a sense, created independence movement, but the situations were developing because of which Gandhiji's talks were being heard, people were getting together, and so on and so forth. Similarly, situations were developing that created a framework that India required a completely new way of doing things. India was a pioneer in automated trading post-94, but overall, society views change, the technological frameworks change, and we need to also change with times. So that is what over last almost 25 years, BSE lost its preeminence in at least the trading part, although mindset still, if you get down at the airport or railway station and you say you want to go to stock market, you will be taken here. It will not be taken to NSE, although NSE trades more. Sometimes I also jocularly tell that we are not doing a good awareness of investors in Pakistan, so that we keep on getting more threats compared to NSE. So basically, still BSE is a brand name which has kind of been there in people's mind. Over last 8-10 years, we have changed our ways. One of the biggest changes that has happened, which people don't talk about, is none of us own a single share in BSE. Neither me nor the two colleagues of mine. None of our employees at senior level are allowed to own shares in BSE. We are employees and will continue to remain employees. So there is no old fights between the member groups of presidents and vice president and treasurer, and they used to have a lot of fights in terms of business also. So we have become basically people who are professionals who get paid reasonably well. It is not that we are not paid well. We are not paid government salaries.
But our job is to ensure that a free, fair, transparent, efficient markets take place in this premises. And today, of course, premises is only a conceptual premise because you can be anywhere in the world and still you can trade on this place. We are the fastest exchange in the world with 6 microseconds response time. In 1 second, there are 1 million microseconds. We give you a response in 150,000 of a second. Although we claim 6 microseconds, we usually give response in 2 microseconds. 1/2 of a millionth of a second. Many people tell me कि इतना फास्ट करने से क्या होएगा? कुछ दिखता तो है नहीं. 1/3 of a second you can't see. How is it that you are becoming so fast? Why? What is the benefit of this? The fact is, today in highly fast trading world, most of the orders today in India come from computers. Computers are thinking and placing orders. There is no human thinking. But that has also generated a lot of trading volumes, but no real actual activity. So it's like you are running very fast on the treadmill, but you are staying at the same place. And also paying for the electricity. It is happening to most investors in some ways by over trading. Today, India has a dubious distinction of being the most speculative nation on earth. Our derivatives to equity trade ratio is around 29:1. So we are not world champion in most things, but at least in this sattebaji, we are world champions. And that basically tells you that sometimes when given a choice, we do all non-productive activities and very little productive activities. But as a developing country, we have to worry about whether we do work on productive stuff or not. And once you automate, you'll be able to do many, many things. You will be able to not only trade the commodities on futures and take deliveries, give deliveries, but my hope is that somewhere on the line, if you want to automate your daily business on spot, that also we should be able to attempt together. See, we are basically experts of transaction processing. We do nothing but transaction processing. And none of us have any stake in anything. But if you can trade for a delivery after 11 days, you can trade for a delivery after 1 day also. There is not much of a difference. If you can take delivery from warehouse after 11 days, you can take delivery after 1 day also. So there are many, many newer things that may come. When earlier I used to say this, in year 2000, I had started a company for doing B2B e-commerce. After setting up NSE for almost 7-8 years, I started on my own. And I used to tell people, nobody wanted to do official work because tax used to be difficult to handle. Today with GST and all, things are becoming easier. And even if you don't want to pay tax, we'll have to pay tax. So might as well, if we can automate large portion of our work, it may also create a framework where we might be able to take larger, faster bank loans. We might be able to do many things, expand business manifold and so on and so forth. And that is one thing I would like to kind of put in your mind, that if you want to do that, we are there. If you think, no, it's not a time, it's fine. Maybe we don't have to do that. Now, having said and set up a commodities exchange which is going to go live from October this year, which SEBI has given approval. We are again not experts in the metals market. At most we know the stock market. We don't know metals market at all. So the way it will work is we will give you the trading, clearing, settlement, all those margining systems, which are as per the regulations. But other things we'll have to take the help and guidance from the association. And today it is a metals association, but it could be, we also have tie-up with the Soybean Producers Association. We have also tie-up with many other associations. So for each commodity which comes under each specific association, we are going to work hand in hand under the guidance of the committees, which are essentially made up of members, so that deliveries,
where the delivery centers would be, whether a delivery is considered good delivery, bad delivery, what kind of activities, what is considered a deliverable item or not. All those sort of day-to-day items as well as the policy items will have to be done in consonance and in association with the each association which is going to run this business. So we are trying to act like a service provider to the association rather than being some sort of a super regulator. We have a regulatory requirement from SEBI and ministry and all that we'll have to perform. But overall, the day-to-day business will have to be done in close coordination with you guys. And I hope all of you will be able to contribute to ensure that the business works smoothly and on day-to-day basis, and we do not face any large issue. When I joined the stock market in early 90s, we used to have 108 ways, like Japmala na Manka, like that. We used to have 108 ways of doing bad delivery in certificate, share certificate में तरह-तरह का bad delivery होता था. तो धीरे-धीरे करके उसको depository बनाया, धीरे-धीरे करके उसको remove किया. Of course, in a physical metal, you can't remove physical metal. Many people have tried in India to do only trading and no delivery. It is what I call, it's like saying that you want to go from Mumbai to Delhi on 1st August and you book a ticket. And you go to the airport and they give you the difference in money. कि वो 14,000 रुपये में खरीदा था, अभी 15,000 रुपये हो गया, 1,000 रुपया लेके भागो, ऐसा कोई फ्लाइट नहीं होता है. तो that non-delivery based derivatives are like that. उसका कोई वजूद नहीं है, टाइम पास है. ऐसी बहुत चीज़ इंडिया में होती रहती है. We are not going to promote, we are not in that framework to do just faking of markets, just to ensure that people think thousands of crores or lakhs of crores are getting traded. We want to really connect to the real industry, real economy of India. And for 143 years, this place has helped India create wealth of $2.5 trillion in equities. If you take debt, it is another 500 billion. So totally $3 trillion. India's wealth last 2 weeks back, there was a newspaper article that India's total wealth is estimated at around $8.8 trillion, out of which $3 trillion is represented here in this hall, more than 1/3. Why it has been done is because there is a trust of people for 143 years, that if you put money into companies listed on BSE, somehow your money will not get wasted. It doesn't happen in all companies, but slowly, 143 years, people have come to realize where to put money, where not to put money, and we try to do our job more sincerely, seriously. And that's why we focus on raising capital, doing work which is more to do with real economy rather than just the fraud part of the economy. And that is where I think this association between BMA and BSE is going to bring additional comfort to the government, to everyone, to all the stakeholders, that we will continue to do work which is really physically connected to real life, day-to-day stuff, not just trading, and only then nobody knows what is happening. There are contracts today in India where there is no such commodity in trading in India. There is no such delivery can happen in India. Everything is happening on American prices, American this, American that. We can't have those kind of, we can't be subjugated third party way. So if you have to create the benchmark price on which we need to settle by the association, we should do that. And of course that price has to be such that people cannot claim that it is dubious. So there is a lot of onus on us together. And going forward, if you are able to create that, given the growth that India is going to have over the next 25, 30 years, this market will become one of the largest in the world. But to make it one of the largest markets, we'll have to also ensure it is run fairly, transparently, efficiently, honestly. And people who are trading in that market get good deliveries. They are aware that these prices are not fake. These benchmarks we create are not fake.
And for that, we'll have to continue to work harder every day, because somebody has said, झूठ की कोई इम्तिया नहीं, सच थोड़ा बढ़े या घटे तो सच न रहे, सच थोड़ा बढ़े या घटे तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो वही वील हैव टू क्रिएट, जो अपन बोलते हैं ना 100 टच का सोना, वील हैव टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क दैट जो बीएमए से भाव निकलता है वो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, और उसके लिए थोड़ा अपने को पर्सनली थोड़ा नुकसान भी होता है। वील हैव टू ensure that the credibility of the organization, credibility of the signals we give, the pricing we give, will have to be correct. So with that, I really appreciate all your efforts. All of you have come together on a weekend. I really appreciate and hope this association between BSE and BMA will go a long way going forward. Sudhirji must be coming anytime soon, but in the meantime, we will continue the process so that we can complete in time as much as possible. So thank you very much for coming today. Thank you, sir. Next, I'd like to invite Shri Kushal Jain and Shri Ankur Bapna, directors, to join the BME dignitaries on the dais to felicitate Shri Neeraj Kulshrestha, Chief Business Operations, BSE. We have some more felicitations to get through, so I request our dignitaries from the dais to stay in the front. And I'd like to request Shri Kishore Jain and Shri Mahendra Mehta, directors, to join us at the dais to felicitate Shri Samir Patil, Head Business Development, BSE. I would now like to call upon Shri Samir Patil, Head Business Development, BSE, to deliver his remarks. Good morning, everybody. Shri Ashish Chauhan ji, Shri Rikav Mehta ji, respected dignitaries on the dais, off the dais, Shri रोहित शाह जी, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सर, मैं अनुमति चाहूँगा हिंदी में बात करने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रेड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आशीष जी ने काफ़ी बता दिया बीएसई के बारे में, हमारे विजन के बारे में। मैं क्योंकि ट्रेड के सदस्य जो जुड़े हुए हैं, ये वो हाजिर बाज़ार से जुड़े हुए हैं, एक्चुअल मार्केट से जुड़े हुए हैं। आज इनको चाहिए एकदम सक्षम, पारदर्शक प्लेटफॉर्म, जहाँ पे ये आके अपना कमोडिटी के अगेंस्ट में, भाव जोखिम के अगेंस्ट में सुरक्षितता कर सकते। और बीएसई का ये विजन है, फ्यूचर है कि वो प्लेटफॉर्म हम आपको दे देंगे। बहुत सारे कमोडिटीज़ जो ट्रेड होते हैं आज, नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, टिन जैसे ट्रेड होते हैं, काफ़ी डिलीवरीज होती है इसके अंदर। आज जो ट्रेड हो रहे हैं उसमें डिलीवरीज नहीं हो रही है, तो हमारा ये पूरा
इसके अंदर कोशिश होगी हमारी कि इसके अंदर हम लोग डिलीवरी करें, डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके आए और आपके सहयोग से इस कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुल बनाए, सफल बनाए, ताकि सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि जितने भी इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं वो आकर के इस सक्षम और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने भाव जोखिम के विरुद्ध अपने आप को सुरक्षित कर सके। हमारे 1 अक्टूबर से कमोडिटीज़ लॉन्च हो रहे हैं। हम इसके बाद में, ये तो अभी शुरुआत है, मैं समझता हूँ ये हमारी शुरुआत है, इसके बाद में हम एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे, हमारे कॉरपोरेट से लोगों को इनवाइट करेंगे, हमारे मेंबर्स से लोगों को इनवाइट करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे। उसके अंदर काफ़ी सारा चीज़ डिस्कस होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग कैसे होगी और सबसे महत्वपूर्ण डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी की गुड डिलीवरी कैसी होगी, कौन सी डिलीवरी यहाँ पे बैड डिलीवरी के रूप में उसका असर होगा और सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण चीज़ डिलीवरी सेंटर्स कहाँ होंगे और उसके वेयर हाउसेस कहाँ होंगे। तो ये सारा चीज़ आगे चल के डिस्कस होगा, उसका डॉक्यूमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बनेगा और अप्लाई करेंगे और जब हमको अप्रूवल्स मिलते हैं हमारे रेगुलेटर से हम उसको लॉन्च भी करेंगे। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, फ्यूचर में ट्रेड से प्रति लोग जो जुड़ना चाहेंगे वो आज बीएसई की तरफ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज की रूप में उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ में मैं अपने 2 शब्द यहाँ पे 2 शब्द बोल के विराम करना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you. Next, I'd like to request Sri Sandeep T. Jain, Senior Vice President, BME, to share his thoughts with us. Namaskar or good morning. Dignitaries on dais. FM थोड़ा सा डिले हो रहा है उनको आने में कोई वजह से। BSE MD and CEO श्री आशीष चौहान जी, BSE officials, BME and allied association members and distinguished guests, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। यहाँ उपस्थित सभी मेंबर्स ये सोच रहे होंगे कि BSE के साथ जुड़ने में हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। BSE के साथ हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई और डिस्कशन के दौरान हमने ये देखा कि इंडियन कमोडिटी मार्केट में काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है। इस तरह के ग्रोथ को सर्विस करने के लिए एक एफिशिएंट कमोडिटीज़ मार्केट की स्थापना की ज़रूरत है, एक प्री रिक्विजिट है। BSE और BME दोनों अपने अपने फील्ड में काफ़ी प्रोग्रेसिव है और अभी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ शेयर करने के लिए साथ में जुड़ गए हैं। आगे BSE और BME सेमिनार साथ में कंडक्ट करेंगे और कमोडिटी मार्केट के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे। साथ ही BSE और BME नॉन फेरस मेटल कमोडिटीज़ के डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करेगा और BSE और BME एक दूसरे के बारे में जो भी आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो उसमें हमारी बात लोगों तक और गवर्नमेंट तक पहुंच सकेगी। मैं आपके समक्ष अब तक के प्रिलिमिनरी डिस्कशन जो कि BSE की तरफ से पिनाकिन दवे ने काफ़ी मेहनत की है उसके बारे में, तो उनके साथ हमारा जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में मैं ब्रीफ कर देता हूं। तो सबसे पहले फ़ायदा यह है कि हेजिंग, प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स को BSE का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे कि प्राइस रिस्क हेज हो सकती है। जिस वक्त आपका फिजिकल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है और जो एक्चुअल सप्लाई सेटल होता है उसमें कई बार ऐसा है कि जैसे दिन, महीने, साल कुछ भी निकल जाते हैं और उस दौरान हमारा मार्केट, जैसे अभी पिछले 5-10 साल में मार्केट इतना वोलेटाइल हुआ है, तो वो वोलेटाइल मार्केट में किसी को भी कोई भी तरह का नुकसान हो सकता है और उस नुकसान को ये कमोडिटी मार्केट, ये जो BSE शुरू करने वाले हैं, तो वो कम से कम नुकसान हो वैसी कोशिश हो सकती है। दूसरा,
प्राइस डिस्कवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली, प्राइस डिस्कवरी वाली। बीएसई पे बेस मेटल ट्रेडिंग शुरू होते ही हमें रोज़ाना ट्रांसपेरेंट, विश्वसनीय और रियल रेफरेंस प्राइस मिलेगा। हमें इंडिया में कंजम्पशन के लिए QLME, कॉमेक्स, शंघाई मेटल एक्सचेंज को रिफ़र करना चाहिए। हमारा लोकल कंजम्पशन ही इतना बड़ा है, तो लोकल मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के लिए एक प्राइस एक्सचेंज द्वारा निकला जा सकता है। और नेचुरली मतलब जैसे अगर लोकल मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो हेजिंग भी अपने लोकल करेंसी में होगी। अब बात करते हैं प्राइस कन्वर्जेंस की। बीएसई का प्लान, जैसे जो डिस्कशन अभी तक जो हुआ है उसके हिसाब से पैन इंडिया वेयरहाउस नेटवर्क के माध्यम से बीएसई में नॉन फेरस मेटल के डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स फिजिकली सेटल किए जाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि फ्यूचर प्राइसिंग फिजिकल मेटल से रिफ्लेक्ट की जाएगी। अब आते हैं कि जो वेयरहाउस नेटवर्किंग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होना है, तो प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स और कंज्यूमर सप्लाई चेन तो अभी भी है, अभी भी काम तो चल ही रहा है, लेकिन हमारे लिए एक ये एडिशनल डिलीवरी का ऑप्शन होगा वेयरहाउस नेटवर्क, जिसकी वजह से हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस में मटेरियल मिलेगा। फिजिकल सेटलमेंट, बीएसई सिर्फ वो मटेरियल एक्सेप्ट करेगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच करता है और जो फिजिकल मार्केट में गुड डिलीवरी कहलाता है। जो सेटलमेंट की डेट होगी वो तो डेफिनेटली जो एक प्रॉम्प्ट डेट हमें सेटलमेंट की डेट होगी, जिसमें बीएसई मेटल कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बीएमए के सजेशन से और रिकमेंडेशन से बनाए जाएंगे। सेटलमेंट डेट्स मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनल की जाएगी, जिससे हेजिंग प्रॉपर वे से हो सकती है। आगे रेफरेंस प्राइसिंग के बारे में बात करूंगा। फ्रेंड्स, कोई भी एक्सचेंज का सबसे बड़ा फंक्शन होता है प्राइस डिस्कवरी का। बीएसई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जो प्राइसिंग होगी वो ग्लोबल रेफरेंस प्राइजेस हो सकती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बीएसई में लिक्विडिटी लेवल किसी भी लोकल मार्केट से अधिक होने के चांसेस है और इंडियन मार्केट बेस मेटल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस फॉर्मेशन वेन्यू हो सकता है। बीएसई बीएमई का रेफरेंस प्राइस भी पब्लिश होगा न्यूज़पेपर में और वेरियस मीडिया में। तो उसमें जैसे जो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे उनके लिए वो रेफरेंसिंग के लिए, हेजिंग के लिए, फिजिकल सेटलमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और मार्जिनिंग के लिए काम आएंगे और साथ ही हमें मार्केट ट्रेंड का भी पता चलेगा। स्पेकुलेशन, ये थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है क्योंकि काफ़ी लोग ये बेसिकली ये लगता है कि इसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा होता है कोई भी एक्सचेंज में। वो बात एक लेवल की बात सही है, क्योंकि जो एक्चुअल डिलीवरी होती है और जो एक्चुअल मतलब स्पेकुलेशन होता है उसमें काफ़ी अंतर है, काफ़ी बड़ा रेशियो है। लेकिन बीएमई और बीएसई एमओयू स्पेकुलेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। हेजिंग और स्पेकुलेशन दोनों एक अलग अलग स्टेप्स हैं। हेजर्स तो क्या है कि भविष्य में घाटे या मुनाफे के मौके को कम या ख़त्म करने के लिए होते हैं, और सट्टेबाजों का तो प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो जोखिम लेना ही पड़ता है। और हमारा प्राइमरी इंटेंशन रिस्क ऑफसेट करने का है, जबकि स्पेकुलेटर्स ही मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये बोथ गोज हैंड इन हैंड कि अगर स्पेकुलेटर्स मार्केट में अगर नहीं है तो आप अपना मटेरियल हेज नहीं कर पाओगे। इसके लिए वो एक मतलब ज़रूरी हो गया है कि जहाँ पर हेजर्स है वहाँ स्पेकुलेटर्स होंगे ही होंगे। आज जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की वजह से डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हुआ है। इसके पहले बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग टैक्सेस हुआ करते थे, लगभग 17 तरह के टैक्सेस थे और बहुत सारे सेसेस थे, लेकिन ये तभी हो सका क्योंकि वन नेशन वन टैक्स है, इसलिए डिलीवरी पॉसिबल हुई। और हमें डेफिनेटली हमारे जैसे जो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हुआ। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा स्टेप अगर लेना इतने बड़े इकोनॉमी में, और जहाँ की हम लोगों का ऑर्गेनाइज सेक्टर और पैरेलल इकोनॉमी इतनी मतलब इतना डिफरेंस था उस चीज़ में, लेकिन ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत मतलब ये बधाई वाली बात है। और मोदी जी और बीजेपी टीम के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ। आप सभी को बीएमई की तरफ से धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
Thank you. I would now like to invite Shri Seetal Kumar Agarwal and Shri Shripal Morakhya to join our dignitaries on stage to felicitate Shri Dipen Agarwal, President CAMET, Shri Nikunj Thorakhya, General Secretary CAMET, and Shri Raju Rathi, Senior Vice President CAMET from Solapur. I'd also like to call upon Ashok Bafna and Hemant Parekh to please join us on stage. Thank you. I'd now like to invite Mr. Nikunj Thorakhya, General Secretary, CAMET, to share his remarks. Good afternoon, friends. I think Mr. Mungativar is taking a little bit more time to come, but however, we will continue with the function. Shri Chawanji, CEO of BSE, Rikhab Bhai, BME President, dignitaries on stage from BME and BSE, and my dear friends Ashok Bhai here, from BME, Hemant Bhai, Dipen Bhai, Raju Bhai Rathi, friends. I think let me compliment first BME and BSE for taking such a fantastic step. I will, again quote what Mr. Chavan said. He made two remarks. One is that times are changing. And I think it is very, very relevant today that the times are changing very fast. And when times are changing, we need to unite. We all need to come together so that we can all move forward. I think that was the biggest takeaway from what you said. And it is most relevant today. Of course, I think this MOU starts a new chapter for BME and for BSE together. And I think many more such MOUs would come, as I could understand, for other commodities. And I'm sure that it will prove to be a game changer for Indian economy. It is also heartening to see that we are conferring, BME is conferring Vyapar Mitra Award to Sudhir Mungativarji. I think there is no one who is more eligible than him for getting this award. I think let us have a big round of applause for him. I will just give you a small example that only about 1.5 months back, LOU was withdrawn very suddenly because of certain scam which has happened by RBI. Now, of course, CAMET team met and we all said that this is going to affect the small and medium enterprises very badly because large units would, of course, have other tools for funding because basically LOU is concerning buyer's credit. And it is one tool which is available for us to avail funding at close to international rates. And I think today everything boils down to cost of funding for trade and industry. So I went to Mungativarji and we were. So he saw me and he said, "Jara baitho, I will meet you. Don't worry, I will meet you," because there were a lot of delegations from Chandrapur.
After an hour and so, I explained it to him. And you will not believe that he immediately picked up the phone and called Finance Minister of India. He immediately, तभी के तभी उन्होंने वहाँ पे मुझे बोला कि आप ठहरिए यहाँ पे, अगर वो कुछ मुझे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे शायद आपको पूछना पड़े. तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को वहाँ पे मेरे सामने फ़ोन किया, मुझे ये बताइए कि कौन से मिनिस्टर ये इस टाइप का काम कर सकते हैं. सो दिस इज़ मुंगतीवार जी. ओनली yesterday only we were with him and he unveiled, I am president of Sufi Steel Users Federation of India, and we came out with a third book on GST. We call it GST Decoded for Steel, and this was e-way bill special. And yesterday he unveiled it, and it is all happening because of his guidance, his support, his cooperation. So I feel that BME is doing tremendous job of conferring him with the Vyapar Mitra Award. So I would like to thank the whole board of BME because you are doing a wonderful job. Thank you. Now I'll come back to CAMIT. What exactly is CAMIT? CAMIT is Chamber of Association of Maharashtra Industry and Trade. I am the General Secretary. And it is an apex body which is representing all the associations across Maharashtra. You name a district, you name a city, CAMIT has representation across all the products, across all the segments. And I think, again here, the need to come under one umbrella is most relevant today. Maybe pre-2014 we were all saying there is policy paralysis, कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत कम टाइम में हो रहा है, which is hats off to this government, the vision of the government. And when times change, जहाँ पे उन्हें बहुत जल्दी चेंज करना है, the way India Incorporate today is working or the way business is happening is completely changing. The rules of the game are changing. Demonetization ले लीजिए या GST ले लीजिए या IBC ले लीजिए, these are changes which have far-reaching implications. And these are all WIP, ये सब work in process है, क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि कहाँ पे क्या इसका affect होने वाला है. तो obviously there has to be a healthy dialogue between the government and trade and industry. And the healthy dialogue is only possible if there is a strong representation from trade and industry, from the associations, from the federation. And that is why there is a need to have a very strong association federation to represent what are the problems trade and industry are facing. The government has a vision, and our vision aligns with the vision of the government, but there would be something wanting for the implementation, because implementation for such a country like India with vast, so many areas and so many different laws could be difficult. And that is what we saw during demonetization. We are seeing that in GST also. But ultimately, the goal is very good, and it is a long-term goal which is going to be very, very good for India Incorporate. That is why it is extremely important that we all come together and represent strongly. More so because CAMIT represents mostly small traders, small industry, the SME and MSME segment. Their voice is generally fragmented. उनके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वो गवर्नमेंट के पास जावे और स्ट्रांगली बोले कि साहब हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये इसको आप थोड़े इसको इससे अमेंड कर दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो. वी कैन सी दैट इन GST ऑल्सो. ई-वे बिल आ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया है, रेट्स में क्या प्रॉब्लम आया है. दैट इज़ द रोल ऑफ CAMIT to represent strongly, unitedly the problems which are being faced by trade and industry, as well as to convey to the trade and industry what are the objectives of the policies of the government and have a win-win solution for both. Now, of course, anything like this, an association like this, is not possible without a strong team. And we are fortunate that CAMIT has such a fantastic team
Firstly, under the leadership of our chairman, Shri Mohan Gurnani, I think 35, 40 years he has dedicated only to trade industry. He has, in fact, given his blood and sweat, if not more, to trade and industry at the expense of his own businesses. And he is our chairman and he is our mentor. It is under his guidance that CAMET is growing. And it is ably supported by Shri Dipen Agrawal, a very, very strong leader. He resides at Nagpur, but very, very resourceful. जिन्हें हम मतलब बोलते हैं कोई धाकड़, ये धाकड़ यहाँ बैठे हुए हैं जो अगर ठान लेवे तो वो करके रहते हैं. And that is what we can see from the work which CAMET has done. Of course, we have our Senior Vice President Raju Bhai Rathi. He is President Sholapur Chamber of Commerce. And he has done tremendous work there. वहाँ पे अभी नई MIDC फॉर्म हुई है, वो उनके कारण हुई है. टेक्सटाइल में उन्होंने काफ़ी काम किया है. GST में ऑलमोस्ट 40 सेमिनार्स वहाँ पे किए शोलापुर में. कॉम्पोजिशन स्कीम में जो चेंजेस लाने थे वो किए, ई-वे बिल में लाने थे वो किए. ही इज़ एवर एक्टिव. Ashok Bhai Bafna does not need an introduction. He is our executive president. He is very well known for his work at BME. Hemant Bhai Parekh, our senior vice president, again a workaholic. जो वो ये भी जो अगर ठान लेते हैं तो ये करते ही हैं. And I am sure this MOU between BSE and BME में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. There are other, I can go on and on. Mitesh Modi, he is All India Electronics Association President. Mitesh Prajapati, जो अभी भाव के साथ ही हैं, उनको साथ में लेके आ रहे हैं. He is also in BJP as a youth leader. Mr. Devendani is there, who is also president. All these people are people with tremendous integrity, people with passion, people who have something in them. They are committed to welfare of trade and industry. So let us hear for them, because CAMET is happening only because of them. Let me go through some of the achievements. I will not go back very much, but a few highlights what CAMET has done up till now. In January 2017, Panvel Municipal Corporation was formed, and suddenly the government put LBT there, although knowing that GST is going to be implemented and LBT would be removed. And this was a big issue for steel trade in Taloja and Kalamboli, because none of the material is being used there, and it comes in and goes out. It was due to major representation by Shri Dipen Agrawal and CAMET to Honorable Chief Minister that in March 2017, to be exact, 17th March 2017, this was removed. So that was one of the achievements. Even now, sawmill issue was there for pollution, and a lot of sawmills were closed down. He immediately went to the chief minister and got a stay on it, and now these sawmills are again back to business. I can go on and on. Kalamboli and SITCO issues there, where there are 5 agencies which are operating there: MMRDA, SITCO, Market Committee, Gram Panchayat, and they are all charging huge fees, but they are not providing any support or any service to the trade in Kalamboli. And Dipen Bhai is again represented to Honorable Chief Minister, and he has he has decided to give an amnesty scheme, whereby even SITCO was charging some additional lease premium, interest, and so on and so forth. There is one very big issue which is going on, which is the Eastern Marina issue of BPT, where almost, I think, 1 lakh people would be displaced. They have been there, they are operating there since about more than 100 years maybe, but they are all going to be removed, and CAMET has made very strong representations to Shri Nitin Gadkari ji. We met almost 3 times to him, and again Sanjay Bhatia ji, chairman of BPT, and that we are hopeful that a rehabilitation policy is due any time, which will give
lot of support and concession to the people who are operating from there. Plastic ban is one issue which has come suddenly, and it is talk of the town for everybody. I feel, CAMET has taken again a lead in that, and only today from here we are going, there is an all Maharashtra meet at the CAMET hall where almost I think 200 associations are coming, the heads of the associations are coming, so that to decide what is the way forward for plastic ban. GST was one thing where CAMET has gone again and again and again to Finance Minister. He was extremely cooperative. Wires and cables, I know Polycab, Inder Bhai had some problems, and we got the rates, again properly done. And there were so many other products where the rates were, changed. So CAMET has been always proactive. They are dedicated, and there is only one objective, and that is welfare of trade and industry. And this is possible because of the individuals, this is possible because of the unity, this is possible because everybody is together, and with single-minded approach they are moving forward, and we have one objective, and that is country first, India first. Thank you very much. Thank you. I'd now like to invite Shri Ashok G. Bafna, Chairman, BME Charitable Trust, to deliver his address. Shri Ashok G. Bafna. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ श्री चौहान जी, श्री नीरज जी, बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के अध्यक्ष श्री रिकब भाई मेहता जी, श्री शमीर जी, श्री संदीप जी, अश्विन भाई वाइस प्रेसिडेंट हमारे, महेंद्र भाई शाह सेमिनार कमेटी के चेयरमैन, कैमेट के हमारे आए हुए हमारे बीच हमारे अध्यक्ष दीपेन भाई, श्री राजू भाई, निकुंज भाई, बॉम्बे नॉन फेरस से पधारे हमारे श्री भंवर भाई, एमआरआई से आए हुए हमारे बीच में श्री संजय भाई, रोहित भाई, जीतू भाई मासमा से हमारे बीच में पधारे हैं, सुरेश भाई लायन हमारे बीच में पधारे हैं, अन्य हमारे बीच में वसंत भाई कोटड़िया जी, सभी मेटल बाज़ार की संस्थाओं का जो बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के साथ में पिछले कई वर्षों से जुड़ी हुई है, उन तमाम अध्यक्षों का यहाँ पर, उनके पदाधिकारियों का यहाँ पर खूब खूब अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज के इस ऐतिहासिक पल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। विशेष रूप से हमारे चौहान जी साहब के लिए, हमारे पाटिल साहब ने हमारे को, समीर जी ने काफ़ी कुछ हद तक हमारे को पूरा अवगत कराया। मैं ये खास विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बॉम्बे मेटल एक्सचेंज लिमिटेड पिछले कई वर्षों से, आपने जब से भी देखा होगा, हेजिंग के सिस्टम पे एक ट्रेडिंग कमोडिटी के कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन सही मायनों में अगर उत्सव का दिवस अगर हम कह सकते हैं तो मैं अभिनंदन का पात्र बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की टीम को देता हूं। और इसलिए भी देता हूं कि बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के तमाम मेरे साथी जो पिछले 10 साल से इस उत्सव के लिए जो डिलीवरी बेस की हम बात करते थे, जो डिलीवरी बेस के लिए हम लगातार संघर्ष करते थे, और उस संघर्ष के लिए लगातार 10 वर्षों से कई कमोडिटी एक्सचेंज आए, हम उनके साथ किसी हद तक कोशिश भी करते थे, लेकिन हम सफल वहाँ नहीं हो पाए थे। लेकिन उस उत्सव को, उस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाया, और उस ऐतिहासिक पल का सिर्फ पेपरों पर नहीं, वो एक हाल ज़मीनी हकीकत के अंदर वो हम कुछ इस दिनों में हम देखेंगे। इसके लिए मैं इस दोनों ही हमारे एसोसिएशन और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जितना अभिनंदन करूँ उतना कम है। और ये उम्मीद भी करता हूँ आने वाले दिनों में कि जिस प्रकार की एक विजनरी के साथ में देश के हमारे आने वाली उस पीढ़ी के लिए जो एक डिलीवरी बेस का मुख्य कारण ये था, बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का मुख्य उद्देश्य एक सैद्धांतिक रूप से, एक संवैधानिक रूप से हम इसलिए उस डिलीवरी बेस के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे कि आने वाला जनरेशन जो है वो, हमने पीछे देखा होगा, जैसे चौहान जी ने भी कहा कि हमारा भी जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ वही है, नेशन को बेस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे ले जाना, न कि
कई हमने पास्ट में देखा होगा, कई लोग, कई मार्केट, ज्वेलरी बाजार का मार्केट ले लो, कई मार्केट ले लो, कई मार्केट के हाल हमने देखे होंगे स्पेकुलेशन के नाम पे वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि हमने उस सैद्धांतिक रूप से उस बात को ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ी के उस ध्यान में रखते हुए हम जब डिलीवरी बेस पर जाने जा रहे हैं, और ये विश्वास भी करता हूं कि आने वाले दिनों में जिस उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस उद्देश्य में कहीं भी किसी प्रकार की हमें परेशानियां तो बहुत आएगी, लेकिन हम सैद्धांतिक रूप से उस परेशानियों को से जूझते हुए, उसके साहस करते हुए हम उसको डिलीवरी बेस को 100% सफल भी बनाएंगे। इसके लिए बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की पूरी टीम और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो आज जाना जाता है डिलीवरीज के लिए, आज इतने सालों का इतिहास है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी इतिहास के साथ साथ बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के भी जो डिलीवरी का जो सपना था, जो आपने ये साकार करने की और आगे बढ़ रहे हैं, वो 100% साकार होगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कुछ ही पल में हमारे बीच में पधारेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, वो पूरे हमारे महाराष्ट्र के लिए फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन हमारे व्यापारी समाज के लिए वो स्तंभ है। वो व्यापारी मित्रता के नाम से हम इसके लिए उन्हें पहचाना भी जाएगा, और भविष्य में भी उसी नाम से पहचाने जाएंगे कि जब जब भी व्यापारी समाज ने एक छोटी से छोटी बात भी अगर उनके पास लेके गए हैं, तो उन्होंने बहुत ही एक अच्छे विजन के साथ, अच्छे तरीके के साथ में उन्होंने हमारी जो तकलीफें हैं उसको सहर्ष वो अनुभव करते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे, और हर हाल में व्यापारी खुशहाल रहे, उसका उनका पहला उद्देश्य रहता था। ऐसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री सुधीर भाऊ साहब का आज हमारे बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इस ऐतिहासिक पल में, जहां पर हम ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, उस ऐतिहासिक पल में, उस इतिहास रचने जा रहे हैं, उस पल में हम उस मित्रता को यहाँ पर उनके साथ में उनको हम एक टाइटल से यहाँ पर आज हम उनको अवार्ड देने जा रहे हैं। ये हमारे बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के लिए भी बहुत गर्व की बात है। जोरदार उनके तालियों के साथ मैं उनका अभिनंदन चाहूँगा। और उसी तरह से वो हमारे व्यापारी के साथ में, व्यापारियों के भविष्य के लिए, और कैमिट के भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, बॉम्बे नॉन फेरस के। बॉम्बे नॉन फेरस और बॉम्बे मेटल एक्सचेंज ये दो भाई हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और पिछले कई वर्षों से किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आई हो, दोनों ही संस्था एक साथ में मिलकर और भी कई काम करते हैं। और विशेष रूप से आज की इस नवयुग पीढ़ी के साथ में हमें क्या संस्कार के रूप में और आगे किस तरह से देना है, तो बॉम्बे मेटल एक्सचेंज और बॉम्बे नॉन फेरस एसोसिएशन दोनों ही चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं। और चौहान साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, बॉम्बे मेटल एक्सचेंज चैरिटेबल ट्रस्ट आज पिछले 40 साल से कार्यरत हैं, और बिना किसी कास्ट और क्रीड के आज वो सेवा दे रही है। कई प्रकार के आज 25 करीबन 22 से 23 डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट बॉम्बे मेटल एक्सचेंज चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं। और हमारे जो हमारे धातु रत्न श्री सुरेंद्र भाई परिक, जिनके फाउंडर रहे हैं, आज उनकी तबीयत की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं आए, उनको भी मैं आज यहाँ पर याद करना चाहूँगा कि ये जो नींव है बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की, ऐसे महापुरुषों के द्वारा डाली गई है, जो आज हम यहाँ पर एक वट वृक्ष के रूप में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष रिकब भाई एक डायनामिक अध्यक्ष के रूप में, और विश्वास करता हूँ कि जिस पहल के साथ में हम ये आगे बढ़े हैं, इस वृक्ष के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सुगंधित फूल और ज़्यादा से ज़्यादा फल वृक्ष हो और आगे बढ़े, और आने वाली पीढ़ी इसी तरह के ऐतिहासिक पल को हमेशा याद करते रहें। ज़्यादा समय आपका और नहीं लूँगा, मैं इतना ही कहूँगा, जो उम्मीद बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के तमाम व्यापारी, तमाम आने वाली पीढ़ी, मैं जब भी आता हूँ बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की, तो मुझे जाना भी जाता है कि डिलीवरी बेस के अलावा अगर किसी बात होती है तो मुझे पहचाना जाता है। सभी लोग कहते हैं कि नहीं, बात सही है अशोक जी। तो स्पेकुलेशंस के लिए तो आज बड़ी खुशी है मुझे कि एक ऐसा कदम उठने जा रहा है, और ऐसा कदम आगे इसको कारगर साबित भी होगा, और इस पर हम 100% सक्सेस भी होंगे। एक बार फिर से मैं कैमिट के आए हुए मेरे तमाम साथियों का, मोहन भाई गुरनानी का भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, और तमाम यहाँ पर आए हुए तमाम जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे सभी डायरेक्टर भाइयों का, हमारे सभी ट्रस्टी हमारे बीच में हैं, सभी का भी मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूं। और एक बार पुनः बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की इस टीम के लिए जो ये ऐतिहासिक पल हमें जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में मैं इनका खूब खूब अभिनंदन करते हुए मेरे शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय BME, जय BSE। Thank you. Next, I'd like to request Shri Bhavar Bhai Jain, President, Bombay Non-Ferrous Metals Association, to share a few words. Shri Bhavar Bhai Jain. बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के अध्यक्ष रिकब जी, अभिषेक जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी भाइयों,
बंधुओं, आज नॉन फेरस मेटल के लिए एक इतिहास बनने जा रहा है। जिस चीज़ की प्रतीक्षा थी, सब देखते थे लंदन मेटल एक्सचेंज खाली, और हम यहाँ जो बात कर रहे थे MCX और हमारे जो भोईवाड़े के अंदर जो सट्टा चलता था और फिर उसकी वलन होती थी या सेटलमेंट हो जाता था, तो वो जो डिलीवरी बेस नहीं होने की वजह से काफ़ी नुकसान होता था। उसका रीज़न ये था कि डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से आप हेजिंग भी करो अगर MCX में, तो भी वो वाइबल नहीं होता था। अगर आपने समझिए कि इंपोर्ट किया और आपने सामने MCX में हेज कर लिया, तो वो क्योंकि डॉलर का ऊपर नीचे हो जाने से वो जो भी या तो नुकसान हो जाता है या नफ़ा हो जाता था। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप जो एक्सचेंज जो शुरू होने वाला है उसमें एक तो डिलीवरी बेस होगा, प्राइस इंडियन नहीं होगा, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डॉलर ऊपर है या नीचे है। तो सबसे बड़ा फायदा, और GST आने की वजह से ये संभव हुआ है। तो जो आज ये बॉम्बे मेटल एक्सचेंज और रिकब भाई के नेतृत्व में और जो BSE के जो अधिकारी है वो जो आगे काम करना चाहता हूँ, तो मेरा निवेदन है कि जितना जल्दी करे उतना अच्छा है, क्योंकि नॉन फेरस का काफ़ी बड़ा कंजम्पशन है, बहुत बड़ा मार्केट है, और सब लोगों की आज निगाह जो है वो इंडिया की तरफ है। ये बात भी सही है कि जो प्राइसिंग का जो है, अगर आज हम LME देखते हैं और उसी से हम लोग मार्केट तय करते हैं कि भाई हाँ LME आज क्या रहा, $100 घटा या बढ़ा, जो भी है, तो कल अगर ऐसा होएगा और BSE का और BME का जो रेट आएगा उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। तो मैं उनको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अशोक भाई ने जैसा कहा कि बॉम्बे मेटल एक्सचेंज और बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन एक साथ में मिलकर काम करते हैं। ज़रूर है हमारे जो मेंबर्स है वो स्क्रैप की ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, और जो बॉम्बे मेटल एक्सचेंज में है वहाँ पे फिनिश और जो ये है उसका ये है, पर हमारे भी करीब 450 मेंबर है, और वो भी मेंबर ऑल ओवर इंडिया में हैं। नहीं कि खाली मुंबई में, दिल्ली में भी हमारे मेंबर है, चेन्नई में भी हमारे मेंबर है, पुणे में भी मेंबर है। तो मैं समझता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया को बॉम्बे मेटल नॉन फेरस एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है, और हमें आज खुशी है कि बॉम्बे मेटल एक्सचेंज ने ये कदम उठाया। एक बार मैं पुनः उनको बहुत बहुत हमारे बॉम्बे नॉन फेरस मेटल चैरिटेबल ये बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज एक मौका है कि अभी जो बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन ने भी अपने ऑफिस के लिए एक 2000 स्क्वायर फीट का कारपेट हमने जगह लिया है, और अभी जस्ट 4 दिन पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये सिर्फ आपको मतलब हमें खुशी है कि बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन भी अभी मतलब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्योंकि आज बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के पास तो करीब करीब काफ़ी बड़ी 15,000 20,000 स्क्वायर फीट जगह है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा एसोसिएशन बढ़े। एक बार मैं पुनः आप सबको बधाई। ओम अर्थ।